Good morning, students. How are you? Fine. We have done question number 1 to question number 7 of exercise 12.1, and today we will do question number 8 onwards. क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं. सो इन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गिवन? द क्वेश्चन नंबर 8 इज in a year, Seema earned 1,50,000 rupees and save 50,000 rupees. Find the ratio of first one, money that Seema earned to money she save. And the second part, find the ratio of the money that she saved to money she spent. तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपके सामने गिवन है सब कुछ. लेट अस first of all, let us calculate what is given. Write down what is given. Money that Seema earned is equal to 1,50,000 rupees. फिर हम लिखेंगे मनी that she saved. उसने कितना मनी सेव किया? 50,000 rupees. Now money that she spent is equal to जितना मनी उसने सेव अर्न किया था माइनस में सेविंग मनी, अर्निंग मनी minus saving money. So amount will be equal to 1 lakh rupees. So now we have to calculate our first part number 8, the required ratio is equal to money that she earned divided by money that she saved. तो अर्निंग कितनी हुई? 1,50,000 और सेविंग कितनी है? 50,000. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 more 0 से 1 more 0, 1 more 0 से 1 more 0. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो 3/1 यानी कि 3:1 हमारे पास क्या होगा? इसकी रिक्वायर्ड रेशियो. क्लियर? सिमिलरली पार्ट नंबर बी, required ratio is equal to what? The money she saved. to money
C spent. So कितना मनी उन्होंने सेव किया है 50,000 अपॉन कितना मनी स्पेंड किया 1 लाख. So 10 से 10, one more 0 से one more 0, one more 0 से one more 0, one more 0 से one more 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 upon 2. तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई 1:2. So these are both the parts of question number 8. Now next question number 9. There are 102 teachers in a school of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. So here the question number 9. So how to solve this question? So number of teachers हमें पता है, number of teachers कितने हैं यहाँ पर? Number of teachers 102. Number of students कितने हैं हमारे पास? 3,300. So required ratio क्या हो गया? Required ratio is equal to number of teachers divided by number of students. जो चीज पहले पूछी जाएगी नंबर ऑफ टीचर्स तो हमें ऊपर ही लिखनी है, जो चीज बाद में पूछी जाएगी उसे नीचे लिखना है. So 102 divided by 3,300. किससे कैंसिल हो रहे हैं ये? 3 से भी कैंसिल है, 2 से भी कैंसिल है. विटामिन सी ओवरऑल 6 से कैंसिल होगा. तो 6 1s are 6, 6 7s are 42. ये भी 6 से कैंसिल, 6 5s are 30, 6 5s are 30, 0. अभी 17/550. तो इनका रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास कितना हो गया 17:550. This is the required ratio. Next question number 10. In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls, find the ratio. Ratios. Part number A. Number of the girls to the number of students.
number of girls to number of students. अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। जो रेशियो हमें निकालना है उसमें जो पहले गिवन है और जो बाद में गिवन है इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। So in this question, total number of students are total students are 4,320. Number of girls students 2,300. So therefore number of boys स्टूडेंट कितने हो गए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, व्हाट वी गेट 2020 boys. So we have to find the following ratios. In the first one, required ratio is equal to number of girls to the total number of students, the total students. So number of girls कितनी है हमारे पास 2300 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320. सो यहां से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 10 से 10 कैंसिल एंड ये 2 से कैंसिल हो गया 115, ये 2 से कैंसिल हो गया 216. तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या होगा 115 is to 216. So in the part number B, in the second part, required ratio is equal to number of boys upon number of girls. So number of boys कितने हमारे पास 2020 and number of girls are 2300. 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 115, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 101. तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या हो गया 101 is to 115. ये रेशियो हो गई रिक्वायर्ड रेशियो. नेक्स्ट पार्ट नंबर C, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू number of boys upon total students. नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास टोटल कितने हमारे पास
कैंसिल कीजिए 102 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा 216 पे। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया 101 is to 216। क्लियर, तीनों क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, then find the ratio First one, the number of the students who opted basketball, to the number of students who opted table tennis. The second part, the number of the students who opted cricket, to the number of students who opted basketball. And the part number C, we have to calculate the number of students who opted basketball to total number of students. Total number of students. So what is given? So here the total students are 1800, 1800, and number of students
who opted basketball is equal to 750, and number of students who opted cricket is equal to 800. Number of students who opted table tennis अब जितने रिमेनिंग है वो टेबल टेनिस को ऑप्ट करेंगे। सो यहां पर हमारे पास हो गए 1550। तो हाउ मेनी रिमेन्स? यहां पर टेबल टेनिस के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 1800 में से 800 देन 750 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1800 माइनस 800 1000, 1000 माइनस 750 250। सो 250 स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस। नाउ इन द पार्ट नंबर ए the number of student ratio required ratio हमें निकालनी है। ratio is equal to number of students who opted what? In the first part, who opted basketball. Basketball divided by basketball upon the number of the students who opted table tennis. Who opted table tennis. So यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स थे हमारे पास 750 और टेबल टेनिस वाले हैं 250। सो 0 से 0 25 1 जा 25 3 जा, तो 3/1 यानी कि 3:1 स्टूडेंट्स। फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या आया? 3:1 रेशियो। इन द सेकंड वन, पार्ट नंबर बी, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू the number of the students who opted cricket. हमें लिख देते हैं who opted cricket and who opted basketball. Who opted basketball. आप इसको वैसे लिखना ही है आपको। The number of students who opted क्रिकेट, यहां पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिकेट को चूज किया है? 800 डिवाइडेड बाय बास्केटबॉल वाले हैं 750। 0 से 0 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 15 5 से कैंसिल हो रहे हैं 16 पे। सो 16/15। तो रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो 16:15। क्लियर है? In the next part, number C, required ratio it is equal to who opted basketball. Who opted basketball divided by who opted total students, sorry, divided by total students. So क्या रेशियो आएगी हमारे पास? बास्केटबॉल चूज करने वाले कितने बच्चे हैं? 750 डिवाइडेड बाय 1800। 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कैंसिल हो गया,
15 पे कैंसिल हो गया ये, 15 3 जा 15 से 15 1 जा 15, 15 6 जा 15 2 जा 30, 3 से भी कैंसिल हो गया, 4 जा, सॉरी 15 5 जा पे कैंसिल होगा ये, 15 5 जा, और ये 15 से कैंसिल होगा 12 पे। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 5:12। क्लियर? You can solve and practice all these questions. Now come to the next question, question number 12. Next question number 12. In the question number 12, the cost of a dozen pen is 180 rupees, and the cost of 8 ball pens, 8 pens, ball pens is 56 rupees. Now find the ratio of cost of pen to the cost of a ball pen. So here cost of one pen कैसे निकालेंगे? The cost of dozen pen कितनी है? Is equal to 180 rupees. एक डजन का मतलब होता है 12 पेन्स। डजन पेन का मतलब क्या है? 12 पेन। सो कोस्ट ऑफ वन पेन कितनी हो गई? 180 अपॉन 12 इज इक्वल टू 15। डिवाइड कर दीजिए, 15 आ जाएगा। सो अब हम चेक करेंगे द कोस्ट ऑफ बॉल पेन। सो कोस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी है? इज इक्वल टू 56 rupees. So cost of one ball pen is equal to 56 upon 8. भाई 8 बॉल पेन की कॉस्ट 56 रुपीज है, तो वन बॉल पेन की क्या होगी? उससे कम हो जाएगी। ये यूनिट मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं। तो 8 7 जा 56, तो 7 रुपीज। सो रिक्वायर्ड रेशियो कोस्ट ऑफ, पहले क्या लिखा है? ए पेन, देन कोस्ट ऑफ ए बॉल पेन। क्या ये कोस्ट, इन दोनों की कोस्ट का रेशियो आप निकालिए। हेयर इट इज इक्वल टू 15 अपॉन 7। सो इट मीन रेशियो क्या आ गई? 15:7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In the question number 13, consider a statement the ratio of breadth and length
of a hall is given 2:5. Okay, complete the following table. Following table that shows the breadth and the length of hole. So यहां पर हमारे पास एक टेबल गिवन है. इस टेबल में हमारे पास गिवन है ब्रेडथ ऑफ हॉल, and length of hole. So if breadth of hole 10 है तो length of hole कितनी होगी 15. अब ये रेशियो गिवन है तो हमारी एक्चुअल हाइट, एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है. तो यहाँ हमें उनकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है. 10 अगर ब्रेड्थ 10 है तो लेंथ होगी 15 बिकॉज दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है. 5 2 जा 5 एंड 5 5 जा तो ये 25 होगा. इट्स इक्वल टू 25. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है बॉक्स ब्लैंक एंड यहाँ पर है 50. नेक्स्ट में यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है ब्लैंक. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ दीज ब्लैंक्स. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन था. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे करना है. सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो ब्रेड्थ एंड लेंथ यानी कि इन सब की जो रेशियो है इक्वल है. हियर टेबल शो द इक्विवेलेंट रेशियोज. Equivalent ratios of breadth and length of hall. हॉल की जो ब्रेड्थ और लेंथ है उनकी रेशियो दिखा रहा है, इनकी इक्विवेलेंट रेशियो शो कर रहा है. सो हमें पता है रेशियो किस में है, एक्चुअल रेशियो क्या है 2/5. सो 2/5 है तो इट इज इक्वल टू 10/25. तो इट मींस हमने दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से. तो 2 को 5 से कीजिए 10, 5 को 5 से कीजिए 25. सिमिलरली यहां पर भी आप कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 हुआ 5 × 10. तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 10 × 2. यहां पर हमारे पास क्या है 2 × 20. सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इन द रिमेनिंग पोर्शंस में हम लिखेंगे 2 × what 10. यहां पर हम क्या लिखेंगे 5 × 20. So here it becomes a 20, here it becomes 100. So यहाँ पर जो required ratio हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 20/50, इसकी वैल्यू हो गई 40/100. आप इसे भी चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो. इसे हम कैसे लिखेंगे 2 × 5, 5 × 5. So 10/25. तो ये हमारी जो टेबल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी. Okay, so this is your question number 13. Now solve all the questions in your fair notebook and send the solution to my personal WhatsApp number. Okay, thank you.